वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कर्नाटकाक महादेवापुरान जो आमकां क्लासीक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ voter registered आसा. So our team is working on ground to check. त्या 80 लोक जे एका घरान जे registered आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे, डिफरंट रिलिजनाचे लोक रावता. चलन हतालगे म्हणून आनी तिचो घोव वसंत हतालगे ही दोगां जाणां रावता म्हणटकूच उरलेले 26 वोटर्स आहा पळय ते डुप्लिकेट वोटर्स म्हणून पावले आमकां, म्हणजे बोगस वोटर्स. बट इन द मीन वायल एक आमकां नोटिसाक येयलें की ड्युरींग लास्ट लोकसभा इलेक्शन हे आमी पळय 26 जाण बोगस म्हणटात, 2 ते घरांतलीच 26 पळय बोगस म्हणटा, तितूंतले 15 जाणांनी वोटिंग केलां ड्युरींग लास्ट लोकसभा इलेक्शन. Complaint was lodged on 25th of July. The complaint is to highlight the fact that there is one bar in Seraulim called Palmyra Bar and Restaurant, in which bears house number 81B. But there are 80 voters registered in it. 80 voters starting from serial number 627 of part number 11, Seraulim 32 Benavli constituency. And similarly, there are 20 voters in house number 1B, starting from serial number 4 and ending on serial number 23. Now, in all, there are 100 voters. These houses are owned by the Dourado family.